Good evening, friends. Let me share with you the insight that I obtained on stress management by interacting with a group of 30 young students. The topic stress management in itself tells you that stress can be managed. उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है. दैट इज द irony of modern life, that with all the luxuries that we have got, we have also got stress. तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है? सो हमारे ब्रेन की अगर आप टिपिकल केमिस्ट्री देखें, सो इट इज अ बैलेंस बिटवीन कॉर्टिसोल विच इज द नेगेटिव हार्मोन्स इन द ब्रेन जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, विज़ावी एंडोमॉर्फिन्स, सेरोटोनिन एंड डोपामिन. सो दीज आर द फील गुड हार्मोन्स. सो वेदर आई हैव अ लार्जर क्वांटम ऑफ कॉर्टिसोल्स विज़ावी सेरोटोनिन, डोपामिन एंड एंडोमॉर्फिन्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ बहुत पॉजिटिव रहेगा या बहुत नेगेटिव रहेगा. बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि दे जस्ट डोंट फील स्ट्रेस्ड. क्लासिक केस इन पॉइंट इज रॉजर फेडरर, एंड आई वाज वंस टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही सेड क्लियरली कि रॉजर फेडरर इज अ पर्सनालिटी जहां उसके ब्रेन में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 2 टाइम्स ज्यादा एंडोमॉर्फिन प्रोड्यूस होता है. सो दैट इज व्हाई दैट फील गुड हार्मोन का प्रोडक्शन इतना हाई है कि अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, even if it's a grand slam final where there are $3 million on stake, he is super cool. Something like a Mahendra Singh Dhoni, he's super cool across all situations. So उसमें brain chemistry का बहुत important role है. So one of my students was diagnosed by a psychologist and उसको यही बोला गया कि because तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, तो उसके वजह से तुम्हारे ब्रेन में जो डोपामिन या सेरोटोनिन का कंजम्पशन है वो बहुत हाई हो जाता है, and hence there is a deficiency. उसके लिए आप एक सप्लीमेंट ले सकते हैं, सर्टलिन, हाइड्रोक्लोराइड. द अदर ऑप्शन इज टू एक्सरसाइज. सो वेदर इट इज सूर्य नमस्कार, रनिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, द मोमेंट आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स का जनरेशन बढ़ जाता है जो कॉर्टिसोल से आपको लड़ने में मदद करता है. सो इट्स लाइक अ क्लॉग्ड पाइप. द मोमेंट आप मेडिटेशन करते हैं या आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो पाइप clean हो जाता है, and then you start feeling better, and you can try it every time. So there has been this great author who has said that if you are busy in your life, meditate for 1 hour, and if you are super busy in your life, meditate for 2 hours. The meaning of this is कि when you meditate, now telling meditation to a group of 20 people is like they mock you and say कि अरे sir at this age why meditation, हमको साधु सन्यासी नहीं बनना है. But meditation is not about being a sadhu sannyasi. It is about focusing on the present, on your breath. So that day I was attending a session by Mr. Vallabh Bhansali, the chairman of Inam Securities, one of the most prominent investment bankers in India. And he is an ardent follower of Vipassana meditation. उन्होंने हमें आनापाना meditation करवाया उस session में. So such a big guy, right? And if he is also talking meditation, so meditation, be it Vipassana, be it art of living, be it normal Om chanting or whatever your religion prescribes, it helps you clear the mind of all the complications that is had. Because अगर आप देखें, a lot of time we feel stressed because we are either in the past or we are in the future. So जैसे हमें ग्रामर में पढ़ते थे ना, past tense, future tense, present tense, right? But तो आप जब different चीजों के बारे में सोचते तो यू फील स्ट्रेस, राइट? तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए. आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, वेरी इजी टू टेल अ स्ट्रेस गाय कि भाई स्ट्रेस मत लिया, अगर तू पॉजिटिव सोचा, अगर तू चिल मारा कर. आई मीन इट इज लाइक अ स्लैप ऑन योर फेस, भाई कि मुझे शौक थोड़ी चढ़ा है कि मैं टेंशन में आ रखा हूं. बट पीपल काइंड ऑफ जस्ट वॉक ऑफ विद दैट. बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक्सरसाइज, meditation, and then fooding. So for example, if you ate dark chocolates, not the normal Cadbury chocolates with a high dose of sugar. Sugar होने से क्या, you get that surge of energy, but then it's very short-lived. But आप serotonin production के लिए आपको dark chocolate अगर आप खाएं तो आपका mood elevator होता है, and it is scientifically proven. So that's number one: exercise, meditation, fooding. The second is on the personal level. There's a lot of stress we have from relationships around us. कि उसने मेरे को ऐसे क्या बोला, I had this great expectation. I think a lot of expectations are because of this
कि वो मेरा बहुत अपना है, वो उसका है, बट देन देयर इज दिस क्लासिक difference of belief system that there can be between me and someone else from whom I have expectations. So I was reading this book of The Subtle Art of Not Giving a Fuck. It talks about कि भाई मेरा एक्सपेक्टेशंस एक बंदे से ऐसा है बट उसका बिलीफ सिस्टम मेरे बिलीफ सिस्टम से डिफरेंट हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ वर्कोहॉलिक एंड दैट पर्सन बिलीव्स इन टेकिंग इट इजी, नाउ मेरे वजह से वो वर्कोहॉलिक नहीं बनेगा. उस एक्सपेक्टेशन की वजह से आई विल फील स्ट्रेस, दैट रिलेशनशिप विल गो फॉर अ टॉस. बट देन वन शुड नॉट गो फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. फादर को सन से एक्सपेक्टेशन है कि वो सीए बन जाए या आईएएस ऑफिसर बन जाए, सन का इच्छा ही नहीं है वो करने का. देन देयर इज दिस डिस्कनेक्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस, राइट, एंड दैट ओनली लीड्स टू स्ट्रेस. Why expect in relationships? Why think about the past? Why think about the future? And a lot of stress in today's life comes from social media. When you log on to a Facebook and you see your friends, you've been screwed in your office. Your boss has just blasted you inside out. And you go on Facebook, you see कि मेरे इस friend को एक accelerator award मिला है, ये मॉरिशस में छुट्टी मिला रहा है, ये इसने नया होंडा सिटी खरीदा है, and you are like, oh my God, where the hell am I? तो उसकी वजह से all the more stressed है. अगर आप आर्टिकलशिप में भी देखेंगे तो आप किसी से पूछे तुम क्या सीखे, पर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. आई मीन यू माइट हैव बीन जस्ट गोइंग देयर एंड डूइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का वाउचिंग, बट बोलेगा बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. आप स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम के दौरान बहुत स्टूडेंट से बात कर लीजिए, बोले मेरा 3rd रिविजन चल रहा है, बहुत कंफर्टेबल हूँ एकदम, आई एम ऑन अ वेरी कंफर्टेबल विकेट, बट अल्टीमेटली उनके मार्क्स नहीं आते. सो दैट मीन्स दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स टू बी बेटर देन व्हाट दे आर. So if that element of human nature is causing stress, so take a step back and say, I will not log on to social media too often, and I will not take those public declarations of happiness so seriously, because they are the only good moments of his life. किसी की जिंदगी में उसकी लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं होती जिसका उसका फेसबुक का डीपी दिखाता है, और उतनी भी बुरी भी नहीं होती जिसका आधार कार्ड का फोटो दिखाता है. तो somewhere the reality is in the middle. So that's one point. Talking about social media, take it, I mean, thoda sa less seriously, because it's just a blatant display of happiness. Then a lot of stress comes because of thinking about results. So I had once created a video also on Karmanye Vadika Raste Ma Phalesu Kadachana. So this philosophy of karma taught by Shri Krishna thousands of years ago is so relevant even today that the moment मैं रिजल्ट्स के बारे में सोचता हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस कि मैं सीए फाइनल दे रहा हूँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, बिकॉज सबने बोला है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गए तो क्या, फिर उसके बाद तो क्या. बट ऐसा नहीं होता है, राइट. सो इट कैन वेरी वेल हैपन कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करूंगा, सेकेंड अटेम्प्ट में करूंगा. अनदर सिनारियो दैट कैन इमर्ज जिसके मैं मल्टीपल अटेम्प्ट में 5-7 अटेम्प्ट में करूंगा. और एक और सिनारियो इमर्ज कर सकता है कि मैं सीए नहीं बन पाऊं. सो देयर आर दिस 4 सिनारियोज दैट आई कैन इमर्ज, एंड एक टिपिकल डिसीजन ट्री के हिसाब से देयर कैन बी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज असाइन टू ऑल द 4 सिनारियोज, एंड यू हैव टू देन सी ओके ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा प्रोसेस ऐसा है, मैं ऐसा पढ़ रहा हूं, मेरा डिलीजेंस इतना है, इंटेलिजेंस है, एंड देन आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल 4 आउटकम्स. सो व्हाट डू आई हैव अ प्लान बी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्ट्रेस इज बिकॉज आई डोंट हैव अ प्लान बी. तो मेरे को ये वर्क इसी सबऑर्डिनेट से कराना है, और सपोज वो बिजी हो गया, आई डू नॉट हैव अ प्लान बी, एंड दैट विल कॉज स्ट्रेस. तब मैं सुबह उठ के मेरे को सबसे पहले ये लगेगा कि मेरा वो जूनियर का तबियत ठीक रहे. दैट शुड नॉट बी द केस. यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. ये नहीं तो ये नहीं तो ये. वाई टू फील स्ट्रेस? एंड आप रिजल्ट्स के बारे में सोच के हासिल भी क्या कर लोगे? यू विल ओनली फील स्ट्रेस. सचिन तेंदुलकर अंडर प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस has so many times goofed up in Wankhede Stadium. An otherwise very good batsman, but the expectations from the home crowd make his performance go to a 52-week low. So that is one thing. And then there is this classic role of luck. I had that day prepared a video also on the founder of Dalmia Bharat Group and how speculation in silver, that one transaction was the foundation of the Dalmia Bharat Group. There is this element of luck. जैसे एक बच्चे के पैदा होने में बाप का बहुत लिमिटेड रोल रहता है, राइट. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मॉम, बट देन वो फादर बिना तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता, राइट. सिमिलरली
लक बिना सक्सेस नहीं हो सकता. तो सक्सेस इज ऑल्सो अ लॉट अबाउट एफर्ट, अ लॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, बट ऑल्सो अबाउट लक. So that is why I had my friend in college. He always used to say, Inshallah, if we are destined to succeed, if the Lord wants it, we will succeed. So there is this element of surrender to the supreme force, right? Inshallah, God willing. Because every time I cannot succeed, the most stupid argument is to expect a failure-free life. And India, especially, we are like, oh God, he's failed. And that's the reason why our IT companies, be it an Infosys, a Wipro or a TCS, we've always been service delivery driven, low EBITDA companies. Or Silicon Valley is where the products are created. A Gmail, a Facebook, a Twitter is created because they have risk capital. If they fail, there is no harm in failing, right? तो इंडिया में कोई $2 billion आपको नहीं देगा इलॉन मस्क बन के इलेक्ट्रिक कार्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इट इज बिकॉज आवर सोसाइटी एज अ होल does not have a high tolerance towards failure. But in Australia, if they recruit you in the military, they ask you to write down 3 failures in their life. If you don't have failures in your life, you are not mentally strong. You might crumble any moment. तो failures होंगे, and आप जिंदगी के जमाई नहीं है कि सब आउटकम्स आपके लिए हमेशा सही होंगे. There is always an element of randomness. So if there are in a group discussion only 2 people who move to the next round, it is not always necessary that I be in the top 2. I can be third, I can be fourth. That was not made. In cricket also hota hai na, when someone loses the match, he just says, the captain says, oh, today was not our day, the other team played better. That's not that I consciously played worse, but then someone else played better and I have no control over that, right? And I can do only as much as my 100%. So can you put 2 liter Pepsi in a 1 liter bottle, right? You cannot do more than your 100%. So anyone who says give your 200%, give your 300%, it is all hogwash, right? You cannot do more than your 100%. Focus on the strategy. Increase your efficiency. So it's about trying to understand कि मैं ये process में इस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ. So for example, if I am doing manual bank reconciliation statement, trying to reconcile a simple VLOOKUP, and in an advanced level, a combination of index, match, HLOOKUP, or a pivot table can simplify life. So instead of doing the donkey's work, I am now doing smart work. It's about strategy. So when I am trying to remember something, instead of reading it again and again and forgetting, I actually write it down. I create a audio note for myself, explain it to a friend as a teacher, discuss that concept with someone who has practiced it in real life. Smart ways of doing things. Effort अपनी तरफ है. कोई अगर ये बोले कि भाई आपको भाई कैट क्रैक करने के लिए 16 घंटा रोज पढ़ना, आई थिंक दैट्स ऑल हॉगवॉश. यू कुड एज वेल स्टडी जस्ट 4 hours, बट द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट. वो मेहनत करने से धीरू भाई अमानी also once said that anyone who says that he studies for 16 hours a day or works hard for 16 hours a day is either a slow worker or a liar. I mean, वो concept is all stupidity. So whether it is study, whether it is interviews, group discussions, public speaking, the outcome does not matter. I just have to be a bit better than what I was the earlier time. Public speaking में I go to these sessions, I call people to come and speak. Yes, no sir, no, नहीं sir, next time. Why? Because this उनको क्या चीज का डर है कि मैं खड़ा रहूंगा, सामने वाला मेरे के बारे में जजमेंट पास करेगा. भाई जो जजमेंट पास कर रहा है वो कौन सा जेम्स बॉन्ड है? Let him laugh, but then you just become better. Coming to office, the last point, corporate politics. Corporate politics is not something that you can wish away. I mean, ऐसा नहीं हो सकता कि I go to an office and say कि मेरे को यहाँ पे corporate politics नहीं चाहिए, मेरा काम का क्रेडिट मैं ही लूंगा, कोई और नहीं ले सकता. कलयुग है, you will have to live with all sort of jerks. Everyone is going there to earn money, you are also going there. आप रिश्ते निभा नहीं रहे वहाँ पे. So if you cannot play the game, at least be careful of it. And I have created that separate video also on corporate politics. So you don't always necessarily have to play the game, but if you're aware कि पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, मेरे को कहाँ पे कैलिब्रेटेड वे से अपना एक्सप्रेशन करना है, कहाँ पे केयरफुल रहना है, और अपने काम का क्रेडिट दूसरा ना ले जाए, इसलिए उस काम के कुछ लूपहोल्स को अपने पास ही रखना है. जस्ट लाइक अ होम्योपैथिक डॉक्टर, डज ही टेल यू विच मेडिसिन डज ही गिव यू ऑलवेज? नो, राइट? ही विल ऑलवेज गिव यू जस्ट द मेडिसिन एंड यू हैव टू कम टू हिम अगेन. ही इज लर्निंग टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन हिम, राइट?
So a lot of tuition teachers, they keep notes वाला जगह ब्लैंक, बिकॉज जो क्लास में आएगा उसी को वो मैटर मिलेगा, जो अगर सिर्फ जेरोक्स कराएगा उसको वो नहीं मिलेगा. सो दोज आर लिटिल वेज एंड मीन्स with the help of which you can actually keep people dependent on you, कि वो ना हो कि तुम्हारे बिना वो जाके सीनियर के सामने क्रेडिट ले जाए, because that can be quite frustrating, I can understand. So that's how it is. So stress, my friends, can only be managed. Stress cannot be eliminated. So that expectation has to be set very clearly, but there are so many ways, whether it is working on your brain chemistry, cortisol vis-a-vis endomorphins, dopamine and serotonin, exercising, meditation, food, eating habits, on a personal level, having the expectations straight from relationships, not thinking about the past, not thinking about the future, but focusing on the present. सांस आ रही है, सांस जा रही है. Staying a bit away from social media, not thinking about the results, the karmanyevadikaraste ma phalesu kadachana philosophy. Realizing and surrendering to the larger forces, the role of luck. आप पैदा बाली की जगह बालीगंज में हुए, उसमें यू डिड नॉट डिसाइड, बट दैट काइंड ऑफ चेंज योर लाइफ. यहाँ पे आप एक शॉफर ड्रिवन कार में हो या आप टोटो में घूम रहे हो, तो लक हैज इट्स ओन रोल. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंशाल्लाह, गॉड विलिंग, इफ यू बिलीव इन गॉड. एंड व्हाई एक्सपेक्ट अ फेलियर फ्री लाइफ? बिकॉज आप कोई जिंदगी के जमाई नहीं हो. यू विल ऑल्सो हैव योर ओन शेयर ऑफ फेलियर्स एंड इट इज गुड टू फेल. So therefore, not thinking about being judged when it comes to public speaking or in an interview or study session, just focus on doing your best, your 100%. You cannot put 2 liters Pepsi in a 1 liter bottle. And then corporate politics is something which you cannot wish away, but you can only be aware of the equations in your particular organization and be careful that you at least do not become a victim out of it. Thank you so much. In case आपको ये वीडियो अच्छा लगा, do share it with your near and dear ones. In case you have any queries, please put it in the comment section. It kind of helps me, get connected to my audience. Today I have some 14,000 people as subscribers. It's a matter of great pride for me. I can always look कि there is someone who is better than me, जिसके पास 1 lakh subscriber, but वो theory of relative happiness, comparison, that is the death of joy. So I'll be happy with my 14,000 subscribers. Please put it in the comment section. आपका जो भी argument हो, we'll happily discuss. Thank you so much. Bye bye.